हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू शिमीज़ किचन। आज हम बनाएंगे बच्चों के लिए स्कूल लंच रेसिपीज़। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी टिफ़िन बॉक्स रेसिपीज़ के लिए, तो जो मैं अपने बच्चों के लिए बना के पैक करती हूँ उन सारी रेसिपीज़ को मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। So today I am making beetroot rice, broccoli fritters, mutton dry kebabs, fruits, dry fruits and lemon juice. First I'll start making broccoli fritters. ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही हेल्दी हैं। Boil broccoli for a minute, remove excess water by using kitchen towel. And next, finely chop the broccoli. And now transfer this in a bowl. Add 1 egg, half teaspoon black pepper powder, half teaspoon garlic powder, half teaspoon onion powder, half teaspoon salt, half teaspoon red chilli flakes, half teaspoon oregano, half cup breadcrumbs, 2 tablespoon maida. You can also add 1 boiled potato if needed. Now mix well. Make patties and coat with breadcrumbs. You can also freeze these patties for next day lunchbox. Now heat 2 tablespoon oil or butter. Place these broccoli fritters. Fry both the sides till it becomes golden brown. तो guys, ये थी broccoli fritters की रेसिपी. Next I'm going to make beetroot rice. Add 2 tablespoon ghee in a pan. Goes in 1/4 teaspoon mustard seeds, half teaspoon urad daal, some fresh curry leaves. Fry this for a second. And now I'm going to add half chopped onion. Saute till it becomes translucent. And next I'm adding 1 tablespoon grated beetroot. Give this a very nice mix and fry this for at least a minute in a slow flame. And now I'm adding 1 bowl of cooked rice. Give this a very nice mix. Add salt if required. Mix well and slow cook for a minute and switch off the flame. Beetroot rice is ready to pack in lunch box. मेरे पास गोश्त के सूखे कबाब हैं जो मैं एवरी वीक इस कबाब को बना के एक दिन के लिए सुखा के चॉप करके एक कंटेनर में डाल के रेफ्रिजरेट कर लेती हूँ। तो अब मैं इसको फ्राई करके इसको अलग से रख लेंगे। एंड आई एम गोइंग टू चॉप द एप्पल्स। एप्पल को चॉप करके नमक के पानी में डालने के बाद इसको पैक करेंगे तो एप्पल का कलर चेंज नहीं होगा। तो लंच रेसिपीज़ बन के बिल्कुल तैयार हैं। नाउ लेट्स पैक। तो ये थी आज की लंच बॉक्स रेसिपी। आई होप दीज हेल्प यू इन पैकिंग योर किड्स लंच बॉक्स। बीटरूट, ब्रोकोली सब बहुत ही हेल्दी हैं। अगर आप इन वेजिटेबल्स को इस तरीके से बनाएंगे तो शायद बच्चों को पसंद आए। तो चलें फिर मिलते हैं अगले लंच बॉक्स एपिसोड में। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर दोनों करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाने से मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। See you with more amazing and interesting recipes. Take care, stay safe, stay healthy and have a nice day.